सो पहले भी हम इस पे बात किए हुए हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मैनेजमेंट इज। ठीक है, तो मैनेजर का डेफिनेशन जो है मैनेजमेंट के डेफिनेशन से ही डिराइव करेंगे। जरा सा रुको। हाँ, तो हम जो है उसी मैनेजमेंट के डेफिनेशन को ही वो रखेंगे, बैकग्राउंड में रखेंगे टू डिफाइन व्हाट अ मैनेजर वुड बी। तो जैसे हमने बताया कि मैनेजमेंट जो है एक जब प्रोसेस के सेंस में करते हैं तो बेसिकली वी ट्राई टू मेक एनी प्रोसेस और एक्टिविटी और business मतलब in order to run a business we have some basic goals which is like process को आप effective बनाना चाहते हो, है ना, process को आप efficient रखना चाहते हो, ठीक है, and then you also make it flexible, है ना, you want to keep it flexible so that it can basically adapt or adopt according to the external environment, है ना, whatever is uh, external environment which is very dynamic in nature in term of in order to with respect to business. It's like demands are changing, technology environment is changing, political environment is changing, and the competition is also, and day by day you must be seeing that there are products which are coming which can act as substitute of your product. So you have to keep your business processes very flexible. So this is what the purpose of management is. And any person who basically takes care of these objectives and try to keep bring necessary change in process or try to keep the process as it is also, because many of the time keeping a process controlled is also important. So either control or change according to bring or keep this motto or objective and a safe. So ये जो है मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है, एंड दिस द पर्सन हु बेसिकली डज दैट इज योर मैनेजर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको वो करते हैं, होल्ड करते हैं, एंड लेट्स गो टू लीडर पार्ट. So basically we'll also go back to the base word here, which is lead. So what do you understand by lead? Most of the time we what we think is a person who has thousands of followers is a leader, and he is leading them. It's not true actually. Leading is somehow making things ahead of its time. And when we say somebody is leader, we want to say that he has been able to bring people together to, matlab, in general sense, what we call leader is brought people together to achieve some particular goal. So Mahatma Gandhi was a leader, you know. Narendra Modi is a leader. Not every politician is a leader, you know, because not every politician has been able to bring people together for a particular purpose. But there are leaders in this system which they have basically brought people together to serve a common goal or bring some particular objective to the reality. So we in general we think leader as such, but basically when we say if someone is leader in internet technology, so what does this mean? Basically, he has been able to bring or he has been able to push the internet technology forward. And a person can be leader in in himself only. Right? Like if a person is like, let's say, there is a painter, and what he is doing, he bought or he basically he is excelling in a very rare type of painting skill. Let's say not oil painting is very common. Let's say a person is not a painter, sculptor who uses वो जो कूड़े वाले मटेरियल से जो बनाते हैं ना स्कल्पचर, उस पे है, या नेकचंद, चलो हम नेकचंद की बात करते हैं. यू मस्ट हैव वो सीन द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़. इवन आपने देखा नहीं होगा तो आपने कहानी तो जरूर सुना होगा. तो वो नेकचंद नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने, जो ऐसे तो जूनियर इंजीनियर थे, बट व्हाट ही डिड, उन्होंने खाली टाइम में, अपने घर से खाली टाइम में, वो एक जंगल वाले एरिया में जाकर वो
कूड़े और कई सारी चीजें जो कहीं कहीं पे फेंकी दी जाती थी उसको उठाकर लाते थे और उससे कई सारे आकृति बनाते थे और उसको अरेंज करके लिखते करते थे। एंड ही हिमसेल्फ हैज डन दिस फॉर इयर्स, है ना, कई रात, उन्होंने सालों कई रात करते रहे और ऑल ऑफ सडन व्हेन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड दैट, और पहले तो था कि उनके सारे काम को हटा देना है, बट लोगों ने सेव कराया। तो ही दिस पर्सन इज अ लीडर बिकॉज ही इज बेसिकली लीडिंग अ पर्टिकुलर वर्क और art or a thing in a big way by himself also। तो ये भी एक लीडर है, ठीक है। तो जैसे एक कंफ्यूजन का जो हमेशा रहता है कि जब लोग होते हैं तभी आपका लीडरशिप होता है, ऐसा नहीं है ना। when you can also lead a process, you can also lead a technology, you can also lead a company, you can lead people, and you can lead a team also। So you can also lead a team of 5 people, or you can lead a company of 5,000 people also। So leadership is basically making things ahead of its time, थोड़ा क्वांटम लीप लेने के लिए और टू क्रिएट बिग चेंज, वो लीडरशिप में और लीडिंग क्वालिटी में काउंट होता है। तो अगर आप तुम देखोगे कि हमने यहाँ पे जो बात की थी कि इवन द मैनेजर हैज टू ब्रिंग सम चेंज बिकॉज ऑफ द दिस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब टू कीप योर प्रोसेस फ्लेक्सिबल, है ना, टू मेक योर प्रोसेस टू मेक योर प्रोसेस इन ऑर्डर टू द चेंजिंग डिमांड। तो यहाँ पे भी एक मैनेजर नीड्स टू हैव अ लीडरशिप कंपोनेंट इन इट। And even in these days, when we are talking about leading an industry, a leader also needs managerial capability in him। क्योंकि अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेशन से नहीं सोचोगे तो यू विल बी नॉट एबल टू लीड एन इंडस्ट्री। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेशन से नहीं सोचोगे, you will not be thinking about being effective and efficient, you cannot even lead a technology or industry or a team also। So ये दोनों दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन दे नीड ईच अदर। और लीडरशिप का कंपोनेंट मैनेजरियल कंपोनेंट के बिना अकेला है, और मैनेजरियल कंपोनेंट में लीडरशिप का कंपोनेंट भी होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी से कि जैसे ओडीसीएल का कोर्स जब हम बात करते थे, लास्ट ईयर भी हम बात कर रहे थे, या कभी भी हम बोलते हैं कि लीडरशिप डेवलपमेंट इन अ कोर्स, जैसे आप पेपर में आप पढ़ते हो या एचआर में आप बात करते हो लीडरशिप डेवलपमेंट, तो हम ये नहीं बोलना चाहते कि आप लीडर हो जाओगे या हम लीडर हो जाएंगे बाय लर्निंग एचआर और being an HR leader, that means we are the leaders। We basically wants to create leaders at every corner of an organization। जैसे मान लो कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट गिविंग अ ये, तो इस कॉर्नर पे आप यहाँ बैठे हुए एज एन एचआर मैनेजर, और इस कॉर्नर पे एक प्रोसेस को रन करने वाला एक पर्सन है, P1 पर्सन। आप चाहते हो कि दिस पर्सन शुड आल्सो हैव some leadership capabilities so that he can think of the change, he can think of the process which is मतलब ahead, मतलब which is ahead of its not its time, मतलब basically what could be the next change in the process। तो ये मैनेजर है, but you want to bring leadership quality in him because he also has to take many decisions which are not very regular to him, which may come very new to, or which may come as a surprise to him। तो लीडरशिप जो है वो सरप्राइज के एलिमेंट्स को या फिर न्यूनेस को डील करने में लगता है। मैनेजरियल हम बेसिकली मोस्टली वो करते हैं जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक डिफाइंड चेंजेस है, दैट्स व्हाट वी ओनली सी इन मैनेजरियल और मैनेजर बेस्ड मैनेजमेंट बेस्ड प्रोसेस पे। हम जो मतलब कहने वालों की जो प्रोसेस का मैनेजमेंट है उसमें हम एक फ्रीक्वेंटली हैपनिंग थिंग्स को भी अकाउंट करते, को ही अकाउंट करते हैं। बट यू नो since the external environment is changing और सारी processes जो है business की वो they can face new challenges any of the time। So this manager should also have leadership capability in it। और यहाँ पे क्या है कि a leader needs to have a managerial capability because here you are not just leading a uncontrolled crowd, है ना। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो, आप एक टीम को लीड कर रहे हो, आप एक इंडस्ट्री को लीड कर रहे हो, और एक कंपनी को लीड कर रहे हो, और टीम प्रोसेस को लीड कर रहे हो। तो यू ऑल्सो नीड सम, और यू नॉट सम, यू ऑल्सो नीड टू हैव ऑल द मैनेजरियल कैपेबिलिटी इन यू इन ऑर्डर टू बी अ गुड लीडर। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें?